Roll number 15. Roll number 15, just show us your assignment from cost of capital onwards. Where is your index page? Shivani. Yeah. कितने पेजेस हैं बेटा? Sir, 56. Only 56. Yes, sir. Very good. Shivani, can you tell me what is the formula for weighted average cost of capital? Cost of capital. Weighted average. Sir, I don't know from that chapter. From which chapter you are comfortable? Leverage. Okay, tell me what is the formula, all three formula of leverages. Okay, operating percentage change in EBIT upon percentage change in sales. Financial percentage change in EPS upon percentage change in EBIT, and combined percentage change in EBIT upon EPS upon percentage change in sales. Have you appeared your C1? Yes, sir. By, okay. Other than leverage, any other topic where you find yourself comfortable? So cost of capital. उसी से तो क्वेश्चन पूछा था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई भी फॉर्मूला बता दीजिए. सर केडी डेप्थ वाला फॉर्मूला बता दीजिए. KD is equal to interest into 1 minus tax rate plus RV minus NP upon N whole RV plus NP upon 2 into 100. Very good. Roll number 16. Good morning, sir. Good morning, Shruti. How are you now? Sir, I'm good now. Okay. Shruti, as per your wish, whatever you want, you can just tell us. Sir, I have actually completed the assignment. I was writing it the whole week. No. You did not have to write so much. You take care of your health. That is more important for us. Just show me. As you have done it, just show me your assignment book. So this much I have written. So nice of you. God bless you, Bachcha. So Thank you, sir. Any formulas as per your choice? Sir, expenses ratio, expenses divided by net sales, GP ratio, gross profit divided by net sales, net profit ratio, net profit divided by sales, operating ratio, operating expenses divided by net sales. No, operating ratio में थोड़ा आपने मिस करा. Operating expense में operating ratio में operating expense plus cost of sales divided by net sales into 100. Just verify. Okay, sir. Okay. Next. Thank you. And all the best for semester and exam. Roll number 7. Thank you, sir. Good morning, sir. अरे किंजल है. Good morning. Chalo, show me your assignment book. How many pages? Now you are very sincere girl. No, index page में देखो कितने pages है. Index नहीं लिखा है. Yes. किंजल ही रहेगी. कितने pages हैं?
110. 110. Very good. Weighted average cost of capital का फॉर्मूला क्या है किंजल? Cost of capital. आप देखो कहीं इकोनॉमिक्स का बुक तो लेके नहीं बैठी हो? नहीं सर. देखो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके एक चैप्टर है. सर या cost of equity. हाँ ठीक है. हाँ वही चैप्टर को रेफरेंस दे रहा हूँ मैं. Dividend upon market value into 100 और cost of debt का interest into 1 minus tax upon market value into 100. इस तरह से देखिए थोड़ा बहुत एरर्स है. इक्विटी में आपने ग्रोथ रेट नहीं बोला. प्रेफरेंस में आपने इशू प्राइस रिडम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस वाला मिस कर गए. तो अच्छी तरह से पढ़िए. और कोई भी फॉर्मूला आपके हिसाब से जो आती है एनी थ्री सर फॉर्मूला लेवरेजेस का आता है. बोलिए. कंबाइंड लेवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी. फिर फाइनेंशियल का पीबीआईटी अपॉन पीबीटी. सब अपने जो नोटबुक में दिख रहा है वही बोल रही हैं आप. चलो पढ़ाई करो. और हाँ रोल thank नंबर you. 18. रोल नंबर 18. रोल नंबर 18. एब्सेंट है. Yes, sir. 18 absent है. रोल नंबर 19. Yes, sir. You were absent in first CE2 exam Yes, sir. which has been conducted. Show me entire book. Yes, sir. Show us index page and how many pages, how you have written, etc., etc. Sir, I've written up to 90 pages, sir. How many pages, beta? Sir, 90. 9. Yes, sir. Okay, Sahil. Any 5 formulas of ratio? Sir, any 5 formula of ratio? Uh, I don't know, sir. Any formulas, as you know, FM is full of formula topics. Any formulas which you are comfortable with. Had you appeared CE1 conducted by college? Yes, sir. Okay. Sir, I've Any appeared. formula for your choice? Of entire Sir, FM? financial leverage is equal to PBIT divided by PBT. Okay. And combined leverage is equal to contribution upon PBT. Good. Yeah. Next, roll number 20. Prachi, show us the entire book from index and continue. नेक्स्ट टाइम से बच्चे इसमें रोल नंबर भी लिखा कीजिए, नाम भी लिखा कीजिए, क्लास भी लिखा कीजिए, सब्जेक्ट भी लिखा कीजिए.
इंडेक्स में ऊपर के बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे कॉलम्स आप लोग फ्री रखते हो. Don't do that. Yeah, Prachi, continue. How many pages? Some more than 150. Okay. Very good. कैपिटल बजटिंग पे कुछ बोलेंगे? Capital budgeting. Okay, topic of your choice. Any topic of your choice. And topics are ratio analysis. Please go ahead. So should I say formulas? Yes. Any 5 formulas. Okay. So okay. Net sales is equal to Net sales. I will start with gross profit. Item ratio analysis. Ratio. So proprietary ratio is equal to proprietary funds upon net sales into 100. Current assets is equal to current. कुछ भी राइट नहीं है. जितना लिखा है उसको पढ़िए अब. ठीक है? Then only you can get good marks in exam. Next. Roll number 21. Hello. Good morning, sir. नेक्स्ट रोल नंबर्स बी रेडी. हाँ, मैं बोलूंगा नहीं, आपको स्टार्ट कर देना है. 22, 23 ऐसे मैं मेरे वेट नहीं करने का. जैसे 21 खत्म होगा 22 शुड बी रेडी. ओके कृष्णा, गो अहेड, शो अस योर इंडेक्स पेज एंड ऑल द. कितने पेजेस है कृष्णा? वेट. Sir, 110 total. वेरी गुड. देखो कृष्णा ने कैसे नेम, कोर्स और ये सारी चीजें लिखी है. इंडेक्स पेज दिखाओ जरा, प्राची को समझेगा वेयर शी वाज रॉन्ग. दिख रहा है अदर्स को? जस्ट कीप इट फॉर 2 minutes कृष्णा ऑन इंडेक्स पेज. नहीं दिख नहीं रहा, तुम बोल तो दिखेगा, वो व्यू दिखेगा उनको. Sir, first chapter है ratio analysis का, second cash flow, third time value of money, fourth capital budgeting, and fifth is cost of capital, and sixth leverage. ये पेज नंबर्स है. और Very ये good. 7th वर्किंग तो बेटा कैपिटल, वो ये पेज आपको नंबर. ठीक है. वेरी परफेक्ट, वेरी परफेक्ट. चलो कृष्णा, एनी चॉइस ऑफ योर फॉर्मूलाज. 5 फॉर्मूलाज बता दीजिए हमें. Okay, sir. Working capital is equal to current asset divided by current liabilities, and operating leverage is equal to contribution divided by PBIT, and financial leverage is equal to PBIT divided by PBT, and combined leverage is equal to contribution divided by PBT, and cost of debentures is equal cost of debentures का KD is equal to बड़े ब्रैकेट में 1 and small bracket में 1 minus tax rate bracket बंद plus bracket में F minus P bracket बंद divided by N whole bracket बंद after that divided by F plus P divided by 2 bracket बंद. Very good, very good. Next, roll number 22. Okay, thank you, sir. Hello. Yes, sir. Good morning. Morning, Saurabh.
Go ahead. इंडेक्स पेज बताओ. हाँ सर. So 128 pages overall total. वेरी गुड सौरभ. अभी जो आपने कैपिटल बजटिंग का टॉपिक देख रहे थे वहां पे, उसके कुछ फॉर्मूलाज बता दीजिए हमें. तो कैपिटल बजटिंग थोड़ा सा ठीक है, लिखा आपने बहुत अच्छा है. अभी पढ़ाई कीजिए, बहुत जरूरी है पढ़ना. नेक्स्ट. क्या सर कुछ पढ़ो पढ़ो, ठीक है, कोई बात नहीं. अभी मैटर बन गया, अभी बैठ के पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यूज आने वाले हैं. प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे आपके. ठीक है. नेक्स्ट. 23 is not there, and 24 is there in office, and she is there in the meeting. भास्कर So, भी देयर इन मीटिंग होंगे. तुमको पता okay, है, sir. आई हेट ऑल दिस नॉनसेंस. Yes, sir. $25. Yes, sir. Go ahead. You have not appeared first. So start with your index. C1, yeah. Assignment, Assignment 1 of C2. yeah. चलो तो एक सेकेंड ना सर. हाँ. अनिकेत यार प्लीज एक मिनट. एक सेकेंड ना. जस्ट अ मिनट. सर आई हैव टोटल 1. सर एक्चुअली मैं तभी घर पे नहीं थी, मेरे को बाहर से जो बुक मिला मैंने उसमें कंटिन्यू करना चालू किया था. आई हैव कंटिन्यूड इन दिस बुक. जब आप घर आ गई थी. सॉरी सर. जो दूसरा नोटबुक है उसमें भी कुछ लिखा है कि सिर्फ इसी में लिखा है? नहीं सर, दोनों बुक में लिखा है. एक्चुअली ये बुक भर गया था 196 पेजेस इन दिस बुक एंड रेस्ट ऑफ दिस पेजेस. सॉरी, हाँ ये सेकेंड सेमेस्टर आई मीन C2 का है यहाँ पे पूरा. फर्स्ट ऑफ कैपिटल ऑनवर्ड. हाँ. एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस. फॉर्मूला. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चलेगा. ओके. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला D इंटू 1 माइनस T इंटू F प्लस P अपॉन N होल डिवाइडेड बाय F प्लस F माइनस P डिवाइड बाय 2. उल्टा बोल गए बेटा. F माइनस P होता है एंड देन F प्लस P डिवाइड बाय 2 होता है. हाँ, F रोल नंबर प्लस 26 आप पढ़ाई कीजिए. जैसा भी बुक मेंटेन किया उसे पढ़िए आप. रोल Yes, नंबर sir. 26. Yes, sir. चलो कंटिन्यू. Show us your index page and continue with that. कितने पेजेस हैं महिमा? 102 सर. इंडेक्स पेज बताओ. कितने पेजेस थे इंडेक्स पेज पे लिखे हुए? If you speak, we will be able to see that.
So, 102. Very good. Chalo. Any topic of your choice and their formula. For leverage. Chalega. Operating leverage is equal to contribution upon P, PBIT or financial contribution ledger. Sorry, sir. Financial leverage is equal to PBIT upon PBT. Combined leverage is equal to operating leverage into financial leverage. Number 27. Twenty-seven, 28. 27 is So I have made in theory and practical based format. So I have made these are theory and these two are practical. So basically these two are of all sums and everything, and this contains of fill in the blanks, all the objectives as well as formulas. And you can see, sir. Good, Aman. Can you tell me total together how many pages you have just practiced at your home? So the the first assignment you took, it was around 80, and the second assignment I have written, so it is around 70. So approx 150 approx. I have not counted, sir. So actually. Okay. Aman, as per your choice, any topic you can take it and try to elaborate, because you have idea of theory and practical separately. So go ahead. Sir, I will talk about the capital budgeting. So capital budgeting, as you are there is lag in voice, so let us go to you can also say investment or 29. ठीक है, man. Very well done. 29. Thank you, sir. Kushbu, we are unable to see hear your voice. There is some issue regarding your voice. We could not. I mean, I'm unable to hear. What about others? I don't know. Now I'm audible? Yes, now you're audible. Go ahead. Hello? Yeah, now you are audible. Go ahead. Now am I audible, sir? Yes. Okay. Good morning, sir. So here is the topic then. How many pages? 4 pages. I have done 86. Any topic? Yes, sir. Any topic. Go ahead with that formula. Oh. So now I am not able to hear you clearly. Can you speak little bit loud? Any topic of your choice and their formula. Okay, formula. So leverages, operating leverages is equal to contribution upon PBIT, and financial leverage is equal to PBIT upon PBT, and composite leverages is equal to contribution upon PBT. Thank you. Roll number 31. Welcome, sir.
Good morning, sir. But roll number 31, quick, yaar, Anjali. We don't have time. Anjali Gupta. Yes, sir. Good morning, sir. बताओ कहाँ है इंडेक्स पेज वगैरह, कहाँ आपका वीडियो नहीं दिख रहा है? सर वीडियो दिख रहा है अब? Yeah, now it is visible. सर ये इंडेक्स है एंड टोटल पेजेस है 158. Very good. Any topic of your choice, Anjali, and their formulas. Any topic, sir? So working capital. Go ahead. Inventory conversion period equals to average inventory into 365 divided by annual. आप ये वर्किंग कैपिटल साइकिल का फॉर्मूलाज बता रहे हैं मुझे Sorry, सिर्फ sir, working. Sorry, sir, my mistake. ओके गॉट इट वो आता है मतलब ठीक है नेक्स्ट रोल नंबर 33 I have only 3.5 minutes and there are almost 4 students to go 32 सर 33 बोला था आपने 32 है क्या आई डाउट नहीं होगा या 33 गो अहेड हाँ सर ये मेरा इंडेक्स है दिख रहा है सर जी पेज नंबर खाली आपने नहीं लिखा दिख नहीं हाँ रहा सर ऑन एन एवरेज 105 पेजेस है वेरी गुड एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड देयर फार्मूला ratio analysis current ratio is equal to current asset upon current liability and proprietors ratio is equal to proprietors fund upon total asset into 100 and stock turnover ratio is equal to COGS cost of goods sold upon average stock. Very good. And debtors turnover ratio is equal to net credit sales upon average account receivable. Very good. 34. Roll number 3434. Yes, sir. Go ahead. Video on करो. Index पेज बताओ. Afrin. How many pages it is? Sir, 130. आपने भी पेज नहीं लिखा. चलो. Turn the pages quickly. Any 3 formulas? Any 3 formulas? Ratio analysis. चलेगा. Net working capital is equal to current assets and एक second. Last roll number 35. Afrin. अरे सर बोलने दो. अरे ठीक है बच्चा. You are late admission I know. Last roll number 35. Thank you, sir. Yes, sir. Go ahead. Index. So sir, I have not written much, but how much ever I could be able to write, I was written it. Okay, no problem. Any 3 formulas? Dear student, now I have less than 1 minute. So I think I have evaluated every one of you. All the very best for your SE exams. And I'm giving some time to Rhythm Patel to answer few questions. I mean, as per Yes, sir. his knowledge goes. Go ahead, beta. So asset turnover ratio, net sales upon average total assets, sir. But you both have given C1 or not? 34 and 35. Sir, that internals? Yeah. Sir, internals I have given, yes. Okay, go ahead. And so then inventory turnover ratio, cost of goods sold upon average inventory. Okay. Sir, itna hi aata sir. Chalo, all the best everyone. Be at home, be safe. I enjoyed teaching you all.